MDH બિરયાની મસાલા, પારંપરિક બિરયાનીનો અસલી સ્વાદ. असली मसाले सच सच MDH સમાચાર રાજકોટથી, જ્યાં ઓપરેશન સિંદૂર બાદ એક પરિવાર વિખૂટો પડી ગયો છે. પતિ અને બાળકો ભારતમાં, પત્ની અનેક સમયથી પાકિસ્તાનમાં છે. રાજકોટના પરવેઝના પાકિસ્તાની યુવતી સાથે લગ્ન થયા હતા. વર્ષ 2022માં વિઝા પૂર્ણ થતાં મહિલા ગઈ હતી પાકિસ્તાન. ઓપરેશન સિંદૂર બાદ બોર્ડર બંધ થતાં પરિવારની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. પત્નીને વિઝા ન મળતા પાકિસ્તાનમાં તે ફસાઈ ગઈ છે. બે બાળકો પણ હાલ માતાથી વિખૂટા પડી ગયા છે. આ દંપતીએ સરકાર પાસે હવે મદદની માંગ કરી છે. એ લોકો તો તૈયાર જ છે મોકલવા. એ લોકો તો એમ જ કહે છે કે તમે ઇન્ડિયા જાવ કે પેપર મોકલો, કે અમારી પાસે પેપર આવશે તો અમે કે વિઝા આપી દેશું એ બેનને. એમ જ કહે છે એ લોકો તો. સરકાર પાસે શું અપીલ છે? સરકાર પાસે તો અત્યારે એ જ અપીલ છે કે બસ એને મોકલી દે. હવે ગમે એમ કંઈક પેપરમાં એવું કંઈક લખી દે કે આવી જાય, બસ એવી રીતે. કેમ કે અત્યારે તો બોર્ડર બંધ છે, તો મને ખબર છે બોર્ડર બંધ છે અત્યારે. ઓપરેશન સિંદૂર થયું હતું ત્યારથી તો હવે बॉर्डर क्यारे खुले तो मने खबर नहीं है, कोई ने खबर नहीं अभी तो क्यारे थाई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मसला हुआ उससे हमें बहुत अफसोस है इस चीज़ का, पर हमारा क्या कसूर है? मेरे बच्चों का क्या कसूर है? मुझे अभी इंडिया वापस जाना है। मुझे मेरे बच्चों, मेरे शोहर की ज़रूरत है, उन्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे मेरे बच्चों से, मेरे शोहर से जुदा मत करें। मैं एक माँ हूँ, मुझे मेरे बच्चों की बहुत ज़रूरत है। હાલમાં સરકાર આ પરિવારને પાછો ભેગો કરે તેવી ચોક્કસ લાગણી અને માંગણી છે. ઓપરેશન સિંદૂર બાદ બોર્ડર બંધ છે. પત્ની પાકિસ્તાનમાં છે, પતિ અને તેના બાળકો રાજકોટમાં છે. આથી આ દંપતી સરકાર પાસે મદદની માંગ કરી રહ્યા છે. ઓપરેશન સિંદૂરને કારણે જે પરિવાર બેરવિખેર થયો છે, મારી સાથે એ રેહાનાબેન वीडियो कॉल थी છે કે જેઓ અત્યારે પાકિસ્તાનમાં છે. બેન, क्या कहेंगे आप? इस अभी आप जो पाकिस्तान में फंसे हैं, कितने सालों से फंसे हैं और आपकी क्या मांग है? मैं 4 साल होने को आ गए, मुझे 4था साल लग गया है। मुझे 3 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं पाकिस्तान में, अभी 4था साल लग गया है मुझे। बस मैं अपनी गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे वापस बुलाया जाए। मुझे इंडिया वापस आना है, मुझे वीज़ा दें। अभी रास्ते बंद कर दिए हैं तो मैं कैसे आऊँ? ना वीज़ा मिल रहा है, ना रास्ते चालू है, तो मैं कहाँ से आऊँ? मेरे बच्चे बड़े हो रहे, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे इन्होंने ही भेजा, इंडिया वालों ने, कि आपको पासपोर्ट बनाने के लिए पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, वरना मुझे नहीं आना था। अब बस मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे मेरी फैमिली के पास वापस इंडिया आना है। आप किस हालत में आप वहाँ पे पहुंची थी और अभी आप एम्बेसी की संपर्क कर रही है, तो वहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मैं 2015 में इंडिया आई थी, फिर मुझे वापस पासपोर्ट बनाने के लिए पाकिस्तान आना पड़ा। मैं 2021 में पासपोर्ट बनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आई थी। फिर कुछ रीज़न के हिसाब से मुझे ना यहाँ पे रुकना पड़ा। फिर उसके हिसाब से मैं वीज़े के लिए अप्लाई कर रही हूँ। 4 बार मैंने अप्लाई कर चुकी हूँ, पर मुझे वीज़ा नहीं मिला। मुझे वीज़ा दे ही नहीं रहे। मैं रीज़न पूछ रही हूँ कि मेरा रीज़न क्या है, मुझे क्यों वीज़ा नहीं दे रहे? तो यही हमेशा कहते हैं कि आप इस्लामाबाद की एम्बेसी में जाके एक कंप्लेंट करें। मैं वहाँ पे भी गई हूँ, वहाँ पे भी मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने सही बात नहीं की, खिड़की मुंह पे बंद कर दी। वो वहाँ पे लोग जो बैठे हुए हैं, इंडियन कंपनी में जो बैठे हुए इस्लामाबाद में, वो कोई जवाब सही दे नहीं रहा। अभी जी बोल रहे हैं रास्ते अभी बंद है, जब मोदी जी रास्ते खोलेंगे, वीजे चालू करेंगे, तभी आप आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। अभी क्या मांगे, आपकी क्या मांगे? तो मेरी यही मांग है कि मुझे वापस आना है। मुझे 4 साल होने को आ जाएंगे, मुझे मेरे बच्चों के पास, मेरी फैमिली के पास इंडिया वापस आना है। मैं यही मेरे मोदी जी से अपील करना चाहती हूँ कि मुझे वीजा दें या कहीं से भी बुलाएं, बस अब मुझे मेरे बच्चों के पास आना है। मेरे पास हर एक जी 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 बोलिए। मेरे पास हर एक प्रूफ है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैंने वहाँ पे शादी की है, मेरे पास सब प्रूफ है इंडियन। सिर्फ ये है कि मेरा एक पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, इस वजह से मुझे इंडिया वापस नहीं बुलाया जा रहा है। સ્પષ્ટપણે જે પરિવાર છે તે કહી રહ્યા છે કે
પાકિસ્તાની પાસપોર્ટ હોવાને કારણે તેને રિન્યૂ કરવા માટે તેઓ જે પાકિસ્તાનમાં ગયા હતા અને ત્યારબાદ ઓપરેશન સિંદૂરને કારણે જે પરિસ્થિતિ થઈ તેને કારણે હવે તેઓ ભારત છે તે પરત આવી રહ્યા નથી. સરકાર પાસે તેઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે આ કેસમાં આ પરિવાર છે તેમનું મિલન કરવામાં આવે અને જે મહિલા છે કે જે પાકિસ્તાનમાં અત્યારે છે તેમને જલ્દીમાં જલ્દી ભારત લાવવામાં આવે. કેમેરા પર્સન ભાવેશ લશ્કરી સાથે મોહિત ભટ્ટ, TV9 રાજકોટ. MDH કિચન કિંગ મસાલા રસોડામાં હોય તો આપણે કાંઈ પણ બનાવી શકીએ છીએ. રીંગણાનો ઓળો, બટેટા ફુલાવર, ભીંડી મસાલા અને બીજું ઘણું બધું. MDH